Hello everyone, welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So today we are back with the following list of topics to discuss. So let's start. The first topic says about the ILO declaration, that is the International Labour Organization Declaration. So recently this was in news because the 17th Asia and Pacific Regional Meeting of ILO has adopted a Singapore declaration. So what is this declaration about? So the declaration was adopted to deal with the issues of dwindling wages of workers, inflation, as well as unemployment. So the declaration adopted that social dialogue is essential to address labor market challenges and finding solutions in crisis situations such as COVID-19 and some of the economic uncertainty. So therefore, the declaration has given several suggestions, okay, to have an influential developmental activities in every country is facing labor issues. So the declaration has given suggestions like to ensure labor protection, also recognition of their right to collective bargaining, okay, which will include for workers in vulnerable situations and workers in the informal economy as enabling the rights for some of the decent work that they are performing. Also, they are going ahead with the closing gender gaps, which increasing women's labor force participation, promoting equal pay for equal work, and also equal value is a much need or much reforms that we can see in this respective society. Also, to develop and implement inclusive labor market programs and policies that supports life transitions, we need to ensure some of the good reformations associated with the labor laws. So, if such number of transition from informal to formal economy and also the rights of the migrant workers needs to be protected, we could see that even various other conditions like improved accommodation, protection of the wages, and extension of the social protection and enhancing bilateral labor migration agreements between both sending and receiving countries could be the further aim of the Singapore Declaration. तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है अबाउट how we could be a suitable atmosphere, how we could directly create a suitable atmosphere for the laborers generally coming in from some other countries to work in some of the other areas. ओके तो उसी के बीच में यहाँ पे कोऑपरेशन के बारे में बात किया गया है. ठीक है, सो नेक्स्ट पे आते हैं. 3 Himalayan medicinal plants. So recently, 3 medicinal species found in the Himalayas have made to the IUCN red list of the threatened species following a recent assessment. So which are these species that are assessed? So यहाँ पे 3 species का नाम लिया गया है. Okay, so the first one being the Mejothropis pelita. Okay, which commonly known as patwa. तो यहाँ पे इसको critically endangered के कोटा का जो प्लेटफॉर्म है उसमें रखा गया है. देन हम लोग का सेकंड आता है फ्रिटिलेरिया सिरोसा. ओके, ये वल्नरेबल के कैटेगरी में डाला गया है. और लास्टली हम लोग का यहाँ पे बोला गया है अबाउट द डैकिलोरिजा हाथीगिरिया. ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्पांजा इज थ्रेटन्ड बाय द हैबिटेट लॉस और इसको एंडेंजर्ड के कैटेगरी में रखा गया है. ओके, तो उसी के बेसिस पे ये जो 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स है तो ये न्यूज में है. तो हम लोग जानते हैं बिकॉज ऑफ सम ऑफ द ग्रेटर प्रोपोर्शंस of this human interpretations, we could see interference. We could see that slowly this type of medicinal plants is totally in destruction stage. तो therefore इसको बचाने के लिए इन तीनों को एक असेसमेंट के दौरान देखा गया कि इनका जो पॉपुलेशन है वो गिरता जा रहा है एंड दैट इज अ वेरी मच गुड कंसर्न फॉर द सेविंग ऑफ दिस रेस्पेक्टिव स्पीसीज. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है अबाउट दिस आयुशियन लिस्ट में जो थ्रेटन स्पीसीज में रहते हैं. ओके, सो वी कुड सी दैट यहाँ पे उन लोग को बचाने का एक बहुत बड़ा रोल होता है. किस कंट्री का? बेसिकली आयुशियन उस कंट्री को प्रेशराइज करते हैं सो दैट दे कुड प्रोटेक्ट द स्पीसीज गेटिंग एक्सटिंक्ट. तो ओके, सो इसलिए ये 3 जो मेडिसिनल प्लांट्स है ये न्यूज में है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखना. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आता है ट्राइसोनिक विंड टनल. तो व्हाट इज दिस? So this trisonic wind tunnel, okay, we could see this at the Vikram Sarabhai Space Center, which was inaugurated by conducting the first blowdown test successfully. So what is this wind tunnel? So wind tunnels are large tubes with air moving inside, and the tunnels are used to copy the accents of objects in flight. So researchers use wind tunnels to learn more about how an aircraft will fly. And space agencies use wind tunnels to test scale models of aircraft and spacecrafts. So some wind tunnels are big enough to hold full-size version of vehicles. So this wind tunnel moves air around an object, making it seems like the object is really flying. So how does this wind tunnel works? So most of the time, powerful fans move air through the tube, and the objective
to be tested is fastened in the tunnel so that it will not move. So the object can be a small model of a vehicle, it can be just a piece of the vehicle, and it can be a full size aircraft or a spacecraft. Okay, so smoke or dye can be placed in the air and can be seen as it moves, and threads can be attached to the object to show how the air is moving. So special instruments are often used to measure the force of the air on the object. So now, if I see about this thing which is known as trisonic, so trisonic refers to what? It's the tunnel's capability to test in three speed regimes. That is, ये three speed कौन सा है? एक speed है below the speed of sound, that is subsonic. एक है at the speed of sound, that is transonic. And एक है above the speed of sound, that is supersonic. तो सबसोनिक, ट्रांसोनिक और सुपरसोनिक में ये कैसे काम करता है, तो इसमें यहाँ पे देखा जाता है. So therefore, we could see that its parts includes air storage vessels and a settling chamber where the airflow is smoothened out and nozzles for releasing the air into test section. ओके तो उसी के बेसिस पे ये न्यूज में है कि कैसे हम लोग एक स्पेसक्राफ्ट को इन सब यूजेस के तहत हम लोग अच्छे से इसका कैपेसिटी, इसका कैपेबिलिटी को जान सकते हैं. ओके तो इसीलिए ये ट्राइसोनिक जो रेफर करते हैं टनल्स कैपेबिलिटी टू टेस्ट इन थ्री स्पीड रिजाइम्स, तो ये हम लोग आज यहाँ पे विक्रम साराभाई रिसर्च सेंटर में हम लोग इसको लेके आ रहे हैं ताकि हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोग का स्पेसक्राफ्ट बिहेव करेंगे इन द आउटर स्पेस व्हेन दे विल मूव आउट. ओके तो उसी के बेसिस पे ये न्यूज में था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. नेक्स्ट आते हैं साइक्लोन मेंडोस. तो अभी क्या टाइम है? नॉर्थ ईस्ट मानसून का, दैट इज द रिट्रीटिंग मानसून. तो इसका जो मेजर इंपैक्ट होता है कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में होता है, ऑन द कोस्ट ऑफ चेन्नई. So therefore, recently it has been reported that a cyclone may impact the Tamil Nadu and Puducherry coast around 8 December to 10 December onwards. Okay. So what is this cyclone Mendos? So Mendos is a slow-moving cyclone that often absorbs a lot of moisture and carry a humongous amount of rainfall and gains strength in the form of wind speeds. So the name has been suggested by the UAE. बहुत important है. United Arab Emirates ने suggest किया है. ठीक है. So the Indian Meteorological Department predicted that a strong storm system may move in the west and northwest direction and intensify in a depression by the evening of December 6. Okay, so it may subsequently strengthen further into a cyclone over southwest Bay of Bengal and move towards the Tamil Nadu and Puducherry coast by the morning of around December 8 to December 10. Okay, तो इसी के लिए यहाँ पे अभी रेड अलर्ट जारी किया गया है. ठीक है, तो therefore we know about the types of cyclones. Okay, where we can find about the tropical cyclone. Okay, where and even you can see the extratropical cyclones which generally occurs in the high latitude and the polar regions. तो tropical cyclones कहाँ होता है? Near to the tropics. ठीक है, so therefore यहाँ पे ये cyclone Mandavus अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूज में है, just because it is directly coming towards the coast of Chennai and Puducherry by the time period we are making this news. Okay, चलो नेक्स्ट में आते हैं. जजमेंट इन जलीकट्टू केस. तो सुप्रीम कोर्ट रिजर्व जजमेंट इन जलीकट्टू केस. ओके सो यहाँ पे अभी जो इनका पेटिशन थे तो यहाँ पे ये रिजर्व करके बैठे हुए हैं, तो इसीलिए ये न्यूज में है. तो फिलहाल हम लोग को जानना क्या है कि व्हाट इज जलीकट्टू. सो वी को नो अबाउट दैट इज दिस इज अ ट्रेडिशनल लाइक क्या बोलते हैं इसको, बुल टेमिंग फोर्ट. ओके ये बुल टेमिंग का एक स्पोर्ट होता है एंड वी कैन सी दैट ये ट्रेडिशन 2000 साल पुराना है एंड इट्स अ कम्पिटिटिव स्पोर्ट. Okay, as well as an event to honor bull owners who reared them for mating. So it's a violent sport in which contestants try to tame a bull for a prize, and if they fail, the bull owner wins the prize. So कहाँ कहाँ ये बहुत सारा पॉपुलर है. आपको ये मिलेंगे मदुराई में मिलेंगे, तिरुचिरापल्ली में मिलेंगे, थेनी में मिलेंगे, पदुकोट्टाई में मिलेंगे एंड डिंडिगुल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु में मिलेंगे. ओके जो ये जलीकट्टू बेल्ट के अंदर आता है. और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड इन द सेकंड वीक ऑफ जनवरी. तो अभी आ रहा है टाइम. ओके एंड इट इज ड्यूरिंग द तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल, दैट इज पोंगल, जो हम लोग के यहाँ पे संक्रांति होते हैं. ठीक है, so therefore this has got a very important part of the Tamil culture. Okay, and it is considered a traditional way for the peasant community to preserve their pure bred native bulls. ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अभी ये एक रो में फंसा हुआ है. ओके जहाँ पे ये बैन होने का बात बोल रहे हैं, सिंस इट इज डायरेक्टली हैम्परिंग द राइट्स, बिकॉज यहाँ पे पेटा भी इन्वॉल्व हो गया है. ठीक है, सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनका जो एनिमल्स का राइट्स है यहाँ पे हनन हो रहा है. तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग देख सकते हैं कि ये इशू चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर से रिजर्व में के लिए रख दिया गया है. ठीक है, सो देयरफॉर इसके तरह ही एक अनदर गेम है इन कर्नाटका विच इज नोन एज कंबाला. ठीक है, तो वो भी याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो दैट इज द कंबाला एज वेल एज जलीकट्टू विद रेस्पेक्टिव टू तमिलनाडु एंड कर्नाटका. ठीक है, चलो लास्ट में आते हैं. एक्सपांड द फूड सेफ्टी नेट विदाउट एनी मोर डिले. तो द रिसेंटली ये एक न्यूज में है. ओके दैट इज
the editorial is basically based upon the delays, okay, जो हम लोग का NFSA और PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा हम लोग के जो खाना पहुंचाया जाता है तो द गरीब पीपल्स, ओके। तो यहाँ पे हम लोग का एक इशू चल रहा है अभी, बिकॉज टुडे though we have the current scenario of going ahead with this NFSA, that is the National Food Security Act, okay, so today we could see there are various number of challenges that India is India is facing with respective to food security. पहला मेजर चैलेंज क्या है? मैनेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ओके। सो ये क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मैनेज है, इसीलिए आज क्या हो रहा है, टुडे वी कुड सी दैट द रेनफॉल पैटर्न इज ऑल्सो स्लोली एंड स्लोली डाइवर्टिंग, और ये जो पेस्ट और वीड अटैक है ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है, ओके। सपोजली इफ आई से अबाउट दिस आर्मी वर्म, ओके, जो एक टाइम में एक मेज क्रॉप्स को डैमेज कर दिया था, ओके। लोकस्ट अटैक 2020 का राजस्थान गुजरात पूरा अफेक्टेड थे, ठीक है। ऑल्सो वी कुड सी अबाउट द वोलाटाइल मार्केट प्राइसिंग, जहाँ पे दिस जो हम लोग का कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है has given more openness to the agricultural commerce, but it is unable to assure more stable market pricing. तो यहाँ पे उल्टा सीधा जो दाम होता रहता है उसके लिए भी इफेक्ट होता है। देन वाटर लॉबिंग, एक्सेसिव इरिगेशन कॉजेस वाटर लॉगिंग, और उसके लिए सॉइल सैलिनिटी भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ऑल्सो वी कैन सी अबाउट द लैक ऑफ फूड मैनेजमेंट पॉलिसी थ्रू द पीडीएस, and also we have seen about the shifting focus to biofuels. So the growth of biofuel market has reduced the land use for growing food crops, because आज लोग क्या कर रहे हैं, more and more biofuels के लिए crops उगा रहे हैं। So therefore today in this whole discussion it has been said that we should prioritize supporting infrastructural development, and we have to go for more transparent food security measures, as well as also to go for this PDS system should be made more engulfed so that everyone could have a better access towards food security. तो आज ये हम लोग सोच भी रहे हैं वन नेशन वन कार्ड स्कीम, which says about the proper issuance of this universal ration cards to individuals seeking food grains, so that the PDS can be accessed at any geographical location in the country, okay. Also we have to see about incentivizing some of the climate resilient crops, and we have to focus towards sustainable agriculture. Then only we could provide support to even other developing countries in Africa and Asia through technology partnership, join research in promoting drought resistant crops, and also if I have to think about mainly of my country, then we have to provide them with a better food security, so that each and everyone would sleep without, each and everyone who is sleeping in this country, okay, should not sleep without any food, okay. तो ये हम लोग का एक मकसद है, which can be even seen that today government is much interested to go ahead with this respective freebies, okay, जो आजकल दिया गया है with respective to this NFSA, तो ये आजकल बढ़ाने का बात बोला गया है। तो इसीलिए यहाँ पे जो फूड सेफ्टी का इश्यूज है तो इसी के डिस्कशन में ये एडिटोरियल है, ठीक है। सो वी कैन सी दिस एडिटोरियल, दैट्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एनालिसिस. So we have this 5 number MCQs. Please do attempt these MCQs and also do join our WhatsApp as well as Telegram channel for further updates. So that's all for today. Thank you and Jai Hind.